क्वेश्चन नंबर 65, एवोरा लिमिटेड। लेट्स ट्राई दिस। देखते हैं पहले तो क्या पूछा गया है इन्होंने नीचे। एक्सप्लेन द कॉर्पोरेशन टैक्स ट्रीटमेंट फॉर साइल्स लिमिटेड इन द ईयर एंडिंग 31st of March 2025 in relation to the acquisition of each of the two assets। अच्छा, each of the two assets बोला उन्होंने। ठीक है, चलो। You should assume that today's date is 1st of June 2025. Yes, the finance director of Evora Limited has requested advice on the following. Evora Limited and Sahil Limited. Evora Limited owns 100% of the ordinary shares in Sahil Limited. अभी ठीक है, तो बेसिकली ये मेरी सब्सिडरी बन गई। Evora Limited and Sahil Limited are both UK tax resident trading companies. Both companies prepare accounts to 31st of March each year। ठीक है, बिकॉज ये दोनों यूके रेसिडेंट है, मैं सबसे पहले तो बेसिक शिट लिख देता हूँ। एवोरा लिमिटेड acquired Sahil Limited। Both companies prepare accounts to 31st of March each year। Nice। Sahil Limited acquisition of assets from an unincorporated business। Okay, Sahil Limited acquired the following assets from an unincorporated business: LT brand 50,000 and specialist machine 30,000। ठीक है। Sales Limited is using both of these assets for its purpose of trade। Nice। LT brand will be amortized on straight line basis over the 8-year period। बराबर है। The specialist machine was previously used by unincorporated business in its trades। मतलब ये second hand machine है। Sales Limited will adopt the most tax efficient treatment which will be available for these assets। तो अभी हमको इन दोनों का मुझे लगता है टैक्स ट्रीटमेंट बताना है। तो पहले मैं एलते ब्रांड का बता देता हूँ। एलते ब्रांड is an intangible asset, and so amortization will be charged on an annual basis। तो मतलब कितना होता है? 50,000 डिवाइड बाय 8, तो 6250। एनुअल amortization will take place। ठीक है, चलो ये हो गया। कितने मार्क्स का है वो? ज्यादा मार्क्स का नहीं है मुझे लगता है। ओ नहीं, 6 मार्क्स का। ओके ओके, दैट्स सैड। Specialist machine, the specialist machine used in the trade is a second hand machine which has been purchased from कौन है ये? From an unconnected business। Thus it was used in the prior trade, and so but still, and sorry, but still capital allowance will be available, and so एक मिनट, ये स्पेशलिस्ट मशीनरी है ना, सेकेंड हैंड वाली। and so AIA will be claimed, and so AIA will be claimed on the same। Thus for the corporation tax it will be a legit capital, it will be a legit uh, tax allowable
deduction, and so tax on 30,000 into 0.25%। अच्छा हाँ, मेरे प्रॉफिट्स है कि नहीं वो तो मेरे को पता ही नहीं है ना। हाँ। will be saved if at the main rate, the pro if the profits are at the main rate। एंड मुझे लगता है मैं ऊपर भी सेम ही चीज लिखना पसंद करूंगा। मैं एक्चुअली आंसर्स बाद में चेक करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू, क्योंकि क्या पता नींद नींद कहीं नीचे जाके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने कुछ बोल दिया तो कि नहीं भाई ये मतलब प्रॉफिट्स है वगैरह ऐसा कुछ, तो मैं बाद में चेक करता हूँ। एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू द रिलीफ्स अवेलेबल for the forecast trading loss, why it will be advantageous for EVORA Limited to commence trading Salema through a permanent establishment rather than an overseas subsidiary. Should I assume that for this part that EVORA Limited does not make an election to exempt the profits from its overseas PEs from। अच्छा भाई ये क्या है भाई। रुक जाते हैं ना। अगर सब्सिडरी है तो क्या मैं टैक्स ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे पहले वो क्वेश्चन आता है। बी का फर्स्ट पार्ट ठीक है ना। रेफरेंस टू रिलीज, अब ही। ओके वेट अ सेकेंड। फर्स्टली we can see that, okay, firstly we can see that Evora Limited is or will be starting to trade in blah blah blah। तो मैं उसमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पे वो कॉपी हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये एक फोटो है। Evora Limited has been advised it will be advantage to operate। So the reasons why it will be much better for Evora Limited to operate in Salema ही है ना, in Salema through a permanent establishment is because it will be a part of the company itself। However, पहले मैं ये बेसिक शीट ले मतलब वो लिख देता हूँ। However, even if a subsidiary is created, even if a subsidiary, even if operations are conducted through a subsidiary, then also subsidiary नहीं, then at least 75% of the subsidiary should be obtained in order for it to be a part of the group relief group
और दी कैपिटल गेन्स ग्रुप। ठीक है, तो मैं क्यों लिखा है पहले तो ये, तो परमानेंट बिकॉज पार्ट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, so the losses which are incurred by it can be offset with the losses with the profits. So the losses which are incurred by it can be offset with the profits which are incurred by the company. However, if operation connected to a subsidiary, then also being a part of the एक मिनट, then also being being a overseas subsidiary, not all the group benefits can be claimed, and thus it is much more advantageous if the company operates as a permanent establishment. The company operates as a permanent establishment in the starting few years rather than it being a subsidiary in the in the loss making years. ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने बोला पार्ट ऑफ द ओवरसीज की, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे कि प्रॉफिट्स इफ द if Evora Limited incurs profits in the current year, ठीक है, if Evora Limited incurs profits in the current year, then then those cannot be elected to be exempted, uh, and so profits have to be, and so tax have to be paid on those profits, and so tax have to be paid on those profits. Hmm. And as because of the upper and the lower limit shrinking down to 1,25,000 and 25,000, we'll be on thin ice. So, and the tax would have been tax would be able to pay at the rate of 25%. तीन मार्क का एक्चुअली फालतू में बहुत सारी लिखती है। स्टेट द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवोरा लिमिटेड of making an election to exempt the profits of the overseas PE from UK corporation tax, and advise the company whether or not it will be beneficial to make this election on the basis of company's current forecast results and its future plans. नहीं 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 भाई, करंट पहले, सबसे पहली बात तो बी का सेकंड वाला पार्ट, इसको लिखित मिलता है, मैं बाद में करता हूँ भाई, ये बहुत ज्यादा है, ये पढ़ा ही नहीं है एक्चुअली मैंने। ओवर एवोरा लिमिटेड हैज बीन एडवाइज्ड दैट डैश पर्पस, ठीक है, ओवरसीज ऑपरेशन विल बी लॉस मेक फॉर द फर्स्ट 9 months of trading after property, ठीक है, एवोरा लिमिटेड विल टेक रिलीफ फॉर द लॉस इनकर्ड इन दैट ऑपरेशन इन सिनेमा एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, एवोरा लिमिटेड currently has no other overseas operations but plans to open an additional permanent establishment overseas within next few years. The tax system in Salema, the rate of tax on the profits of establishment in Salema is 28%. There is no double taxation treaty between, ठीक है. So if basically hmm, the tax consequences of not exempting, क्या है ये भी यार, of making an election to exempt the overseas profit
is is that there will be no double taxation treaty. There will be no double taxation relief that will be available. Okay, that will be available because of which tax would need to be paid in the country of Salema at a higher rate, that is 28%, 26% above. It is 28%. UK of in the earning 26, Salema operation period in the earning 30 है। सेल्स लिमिटेड ईयर एंडिंग, हाँ ये देखो ये 4,20,000 है। तो मैंने जो ऊपर लिया है ना 25% का, वो बिल्कुल सही है क्योंकि ये 4,20,000 पे ही जा रहा है। नाइस। नीदर कंपनी हैज एनी सोर्सेज ऑफ इनकम्स और गेन्स, ठीक है। इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, ठीक है ना। इट विल नॉट बी बेनिफिशियल एंड आई फील अगर हम लोग एग्जेम्प्ट यूके प्रॉफिट्स को कर रहे हैं ना, तो हम लोग लॉसेस का भी क्लेम नहीं ले सकते। ऐसा होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये वाला पार्ट में मुझे जनरली नहीं आता बी का सेकंड, बट आई फील ये होना चाहिए कि अगर मैं एग्जेम्प्ट करूँ मेरे प्रॉफिट को, तो फिर मैं लॉसेस का क्लेम कैसे ले सकता हूँ, है ना। ठीक है। सी पार्ट, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिपोर्टेड on Evora Limited's value-added tax return for the quarter ended 30th of June 25. Services purchased from an overseas legal firm. Basic shit है। Or the services which are purchased from an overseas legal firm will be treated as good as that the services were purchased from a UK legal firm. The input VAT at the rate of 20% will be allowable, for which reverse charge will be executed and output VAT will be paid। एवोरा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड फॉर वैट, वो तो ठीक है। इन अप्रैल 25 एवोरा लिमिटेड एंगेज द सर्विसेज ऑफ लीगल फर्म इन सेलेमा टू विच इट पेड 2,500। क्या है ये, इन द सेम मंथ। तो ये वही है, ये वही है। बट ठीक है, अभी दैट्स ओके। सो बेसिकली वहां पे क्या रेट है वो मैटर नहीं करता। वॉट एवर द रेट देयर फॉर वैट इज, इट डजेंट मैटर, ऐसा हम बोल देंगे। फिर गुड्स एक्वायर्ड फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर, द गुड्स एक्वायर्ड फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर, मतलब वापस मैंने इंपोर्ट ही किया है। हाँ मैं दोनों इंपोर्ट ही किया है। सो अगेन विल बी एज गुड एज कि मैंने, मतलब दोनों के इसमें सेम ही आंसर होगा, खाली सर्विसेज की जगह पे गुड्स का नाम आएगा। और अभी ये कि एवरी एंगेजिंग सर्विसेज लीगल फर्म टू विच इट पेड 100 इन द सेम मंथ। तो अभी मुझे लगता है खाली इसको 20% से मल्टीप्लाई, इसको भी 20% से मल्टीप्लाई, एंड जो भी है उसका इनपुट एंड आउटपुट वैट हमको सेम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर खाली बी का 2 जो है वही थोड़ा सा वो डाइसी है, बाकी सब तो हो चुका है। लेट्स चेक अभी आंसर में। तो ये रहा, लेट्स सी। amortization charged on in sales accounts will be allowable deduction for corporation tax purposes in the year ended 31st of March 25। A charge of 625 will arise। Nice। An alternative treatment would be to claim or written down allowance। हाँ अपन एक्चुअली ये नहीं बोला, written down allowance अपन intangible asset है ना, ये तो अपन पता है क्या कर सकते हैं, whichever is higher वाला मेथड एक्चुअली अपन लगा सकते थे। सो बेसिकली 625 amortization विल टेक प्लेस, ये मैंने यहाँ पे नहीं बोला, इसलिए वो मतलब पहला 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 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। बिकॉज एलिट ब्रांड का सिर्फ इतना नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग एक्चुअली बच गए कि ये amortization है। फिर अपन 4% ऑफ द इंटेंजिबल एसेट ये अपन कर सकते हैं। तो 4% इंटू 50,000, 20,000, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड
higher of 1 and 2 can be selected. तो हमारा हायर तो 6 to 5, इसलिए हम लोग बच गए, वरना हम लोग को वो भी लेना पड़ता। तो ये देखो, एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट वुड बी टू क्लेम और रिटर्न डाउन अलाउंस फॉर टैक्स पर्पसेस इक्वल टू 4% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ब्रांड on straight line basis, but clearly this will be less tax efficient. We just got saved. Okay, so this was a legit miss. This was a legit miss. Yeah, we red miss. आगे, specialist machine acquisition of the second hand brand is qualifying for AIA बराबर है। However, AIA is limited to 1 for 12-month period. Accounting the limit applies to group of unit. ठीक है, the company, so the total qualifying assets acquired by two companies exceed this limit. They may need to choose how to allocate AIA between them and most efficient way. ठीक है, so basically AIA तो मिल रहा है, बस उन्होंने यहाँ पे थ्योरी में और एक चीज लिखी है कि क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप कंपनीज है, आपको 1 मिलियन का एआई नहीं मिलेगा, 1 मिलियन का आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो आपको तो उसका 5 लाख आपको मिलेगा। तो ये थियोरी पार्ट था जो हमने मिस किया, ठीक है ना। ना आंसर करेक्ट है, बट दीज आर जस्ट थियोरी पार्ट दैट वी कुड हैव रिटन बट वी डिड नॉट राइट इट। ये बात तो लोग अपन वो लिजिट भूल गए थे, ये वाला आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाता था, ये वाली अपनी गलती है, ये वाली इट्स फाइन। आगे, फर्स्टली वी कैन सी दैट, हाँ अभी ये वाला बी का फर्स्ट वन, टैक्स एडवांटेज। PE does not constitute as a separate legal entity unlike subsidiary. Therefore, P as P, तो मैंने भी सेम चीज लिखी है, मैंने लिखी है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, मैंने ऐसा लिखा है, बट उन्होंने लिखा है कि PE does not constitute as a separate legal entity unlike subsidiary company. Therefore, PE will incur a trading loss for the first 9 months of the trading. This can be offset against EVORA Limited's trading profit for the year ending 31st of March 26, thereby obtaining immediate tax relief for the losses. However, the trading losses incurred by a non-UK resident subsidiary company would not be available for relief in the UK, so loss relief would be delayed. I was, मतलब मेरे को थोड़ा डर लगा था कि मैं कहीं ना कहीं गलत ना लिख दूं, इसलिए मैं लिखा कि and thus it is much more advantageous and subsidiary making हाँ ये देखो, then also being a subsidiary, being a overseas subsidiary, it will not be able to claim all of the group benefits, ऐसा, ठीक है ना। बेसिकली मैंने ऐसा लिखा है कि ये सारे के सारे ग्रुप बेनिफिट्स नहीं क्लेम कर सकते। इट इज बेसिकली कि आप ट्रेडिंग लॉस को रिलीव नहीं कर सकते। आई वाज जस्ट नॉट गोइंग, मतलब विलिंग टू राइट इट बिकॉज आई वाज नॉट श्योर ये सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा। पहले वैल्यू एडेड के लिए जरा देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स के लिए, फिर उस बी के सेकंड पार्ट पे जाते हैं, बिकॉज इट सीम्स दैट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी डिड नॉट कवर, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, ओवरसीज लीगल फीस, द लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एवोरा will be regarded as being supplied in the UK, as this is Evora Limited's place of business. Accordingly, Evora Limited will be required to account for output tax in its VAT return for the quarter ended. ठीक है, this can recover as a input VAT on same, therefore the expense will not be any, तो basically वो neutral effect जाएगा, बराबर है। Import of goods, on the assumption that Evora Limited uses postponed accounting in respect of the import of the overseas goods from overseas suppliers. These goods will be reported on Evora's VAT return for the quarter ended 30th of June 25 in the same way legal services supplied above. परफेक्ट, ये देखो, सेम सेम टू सेम, हमें सेम का सेम ट्रीटमेंट देना है। इन्होंने खाली क्वार्टर की एक डेट दे दी है, 30th of June 25 इज द क्वार्टर एंडिंग, ऐसा उन्होंने बोला, तो उस वैट रिटर्न के लिए वो जाएगा, दैट्स इट। देयरफॉर दिस एक्सपेंस विल नॉट impact the amount of VAT payable by Evora for this quarter, for this VAT quarter, ठीक है। Now we come down to this election to exempt profits of overseas PE from UK corporation tax. That the trading profits generated in the overseas PE will not be liable to UK corporation tax. बराबर, ये तो बेसिक चीज था, ठीक है। नो रिलीफ विल बी अवेलेबल इन यूके इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग लॉसेस, ये बराबर था यार, ये लिखना चाहिए था। ये मैंने लास्ट में बताया कि मैं ये चीज लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ, ये बराबर है, हम लॉसेस भी नहीं रिलीव कर सकते। No capital allowances can be claimed in UK in respect of the neither election is, हाँ the election is irrevocable, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं भूल गया। Election will apply to all future overseas PE subsidiaries by Evora Limited। क्या, तो ये एक्चुअली अपने को ये वाली चीज रट्टा मारनी चाहिए, ठीक है। अभी एडवाइस, there is clearly no advantage in Evora Limited making this election at this point, as PE is a Salema will generate losses in the first 9 months of the trading, which without making election can be relieved in the UK. When the PE in Salema subsequently becomes profitable,
there will be no UK corporation tax liability in respect of these profits due to availability of double taxation relief. This is because the rate of tax charged in the profits in LMI is higher than the rate charged in the UK. So there is still no advantage of making the election at this point. Perfect. ये भी अपन ने लिखी, ये चीज अपन ने लिखी है कि टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज में कि डबल टैक्सेशन रिलीफ, ये देखो, no double taxation relief will be available because that the tax would need to be paid in the country of cinema is at a higher rate itself. बराबर. तो अपन टैक्स तो इसमें भी सेम चीज लिखी है कि इन रिस्पेक्ट, सो नो यूके कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डीटीआर, ऐसा उन्होंने बस बोला हुआ है, ठीक है. नीचे, इन एडिशन द इलेक्शन वुड प्रिवेंट यूके कैपिटल अलाउंसेस बीइंग अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर of capital assets used in the overseas piece, and no loss reliefs would be available in respect of any future trading losses incurred बाय एनी ओवरसीज पी. तो ये सेम चीज एक्चुअली, ये जो इन्होंने ऊपर लिखा है ना, ये 5 लाइन, यही चीजों को उन्होंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट्स फाइन. बट हमें ये 5 चीजें लिखनी चाहिए, ठीक है. ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, तो ये तो बेसिक शिट था. ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ये तो उन्होंने बस क्वेश्चन को ही कॉपी किया यहाँ पे. देन नीचे उन्होंने क्या किया कि उसी को अगर तुम प्रॉफिट्स नहीं नहीं सेट ऑफ कर सकते तो तुम लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते ऑफ अ पी, ठीक है. नो कैपिटल अलाउंसेस, अगेन नो कैपिटल अलाउंसेस ऑफ यूके कंपनी के एसेट्स विद अदर एसेट्स, वो नहीं हो सकते. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन इन इज इरिवोकेबल एंड द इलेक्शन विल अप्लाई टू ऑल फ्यूचर ओवरसीज पीस एस्टेब्लिश्ड बाय एवोरा लिमिटेड. सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाइस. एनीथिंग एल्स? वैल्यू एडेड टैक्स में ये ठीक है. कैपिटल अलाउंसेस रिक्वायरमेंट बी का 1, डीटीआर, ये एक बार पढ़ लेते हैं. रिक्वायरमेंट्स में when candidates came to give advice, many knew the election was not worthwhile while it was making. However, the facts of the question detailed that overseas tax rate on fees was higher, तो वो भी बराबर है. There was no double tax treaty between UK and overseas jurisdiction. There was lots of confusion about the meaning of this. Some candidates wrongly thought that in the absence of the treaty there would be no double tax. नहीं, वो तो गलत है. Some candidates mistakenly thought that by making the election, the loss would remain in the ignorance. Some candidates mistakenly thought that by making the election, the loss would remain in the overseas PE to be used to save tax in the overseas higher tax rate. Achha, so basically they thought कि we are purposely keeping the loss in the overseas PE so that when in the, because in overseas higher tax rate is payable, so we can set it off there. That's wrong thinking. uh, Only a minority of candidates correctly recognize that with a higher overseas tax rate, DTR would be equal. With a higher overseas rate, DTR would be equal to the UK tax charge. Perfect. ये अपन ने बराबर लिखा था. Or no on any future profits. So overall, there would be no UK tax charge on overseas profits anyway. है ना? There will be no double taxation relief that will be available because of the tax would need to be paid in the country of is higher. ठीक है, वो अपन बराबर लिखा था. Nice. In order to recommend effectively, candidates need to have assessed all aspects of the scenario, that is current losses, future profits, plans for future PEs. Candidates needed to consider all the facts presented to them in the scenario and address them in their answers. Another issue with this part of the question is that a number of candidates thought that they were still answering the question about PE versus overseas. Okay, so a lot of people thought कि candidate B1 का ही आंसर अभी भी दे रहे हैं rather than giving B2 का आंसर. Instead of PE election and so earn few or no marks, candidate should read and reread the given requirement to ensure that they are clear on what they are being asked to do before they begin their answers in order to analysis evaluation. Oh, ठीक है. Requirement in part C. Part C was easy actually. Part C was very easy. Part B का 1. हाँ, part B का 1 भी एक बार पढ़ लेते हैं. This part asks for the explanation. ठीक है. The majority of the candidates were able to score at least 2 out of the 3 marks on this point for recognizing that an overseas PE, the loss could be used by UK company, but this was not the case if the loss arose in the overseas subsidiary. Some candidates lost out on a mark by only describing the consequence with a PE and not going to describe the consequence with an overseas subsidiary. नहीं नहीं, हमने
हमने दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे, सो दैट वाज गुड। ठीक है। नाइस, आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ गुड क्वेश्चन। 15 25 में से आई थिंक 16 से 17 वाज इजीली स्कोरेबल आई फील।